Yes, ma'am. Okay, circle we are going to start. Now the circle chapter was already there in your previous class and so many theorems you have seen over there. Okay, and uses of those theorems as well. Okay, from there we are starting. I'll take one class where I'll help you reminding all those theorems. Okay, because here and there we need to use those theorems. Yes, the proof is not important, which you have learned in class 9, but the theorems are important. Okay, the theorems are important. So let's start. Just a second. Yeah, so if we are having a circle, actually here we will be completely, mostly here we'll be focusing on tangent of a circle. Okay, tangent of a circle. So in case we are having a circle, what is tangent? I'm coming to that. If we are having a circle and if we are having a line or straight line, okay, a line means just it can be extended in the upper direction and can be extended in the downward direction. The straight line I have taken. Now if we are having a circle and a line which is not touching our circle at all, okay, we are having a circle, we are having a circle and we are having a straight line. Now we can clearly see this is straight line is not touching the circle at all. This type of a straight line which we are having, okay, beside the circle, okay, doesn't matter it is where, it can be above, below, beside, whatever. This type of line which is not touching the circle at all is called non-intersecting line. As the name says, it is not intersecting our circle. Okay, now in case we are having a circle, in case we are having a circle and this time there is a line which is intersecting the circle like this. Okay, if we are having a circle and there is a line which is intersecting our circle, this type of line is having a name called secant. This is straight line PQ, we will be calling it a secant. Now, whenever you will see secant, this terminology, that means there is a line which is intersecting the circle at two distinct points. That line is having the name that is secant. Okay. Now, chord you understand. Chord you have seen in your previous class. Have you? Have you? Do you know what is chord of a circle? Yes, ma'am. So chord, this AB is the corresponding chord we are getting. Okay, there is a secant PQ, which is giving us a chord AB. Okay, so the line is having the name that is secant. This which is intersecting our circle at 2 points. So previous, the first condition was there was a line which is not touching our circle. Okay, not touching circle. The second case is there is a line which is intersecting the circle at 2 points. This type of line is called the secant. Now the third case is if we are having a circle and there is a line which is slightly just touching a circle at just 1 point, just like this. Okay, this line is touching the circle at just 1 point, that is P. Okay, this type of line is called the tangent to the circle. So three cases we have seen. One, when the line is not touching the circle, we can call that type of line as a non-intersecting line. If the line is intersecting the circle, okay, at two distinct points, we can call that particular line as a secant. If the line is touching the circle at one and only 1 point, this type of line is called as tangent to the circle. So far, is it making sense to all of you? Is it making sense?
Yes, ma'am. Okay. Now, in case we are having a circle, and we are having a secant, or let's say we are having a circle and I am just taking a wire and tying the wire over here. So basically I took a bangle and I took a wire. Okay. And I have tied the wire at one point, just one point. Okay. Now you understand, if I will tie a wire at just one point, then it will move here and there. If I will just try moving it with the help of the finger, I'll be able to move it, right? So suppose I am moving this wire and it looks like this. Making sense? At first we have tied the wire at point P, just P. Then with the we are just moving it. We are just moving the wire. So it may look like PQ. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Now after a certain point, if I'll keep on moving it, it may look like this as well. It may look like PS. Okay. If we are just moving and moving and moving it, it may look like PS as well. Okay. Here only if I will draw, it will look like this. Agreeing with me? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. If I will move it again and again from here and there, just we are trying to move it, it may look like this. Okay. And here also there is a very teeny tiny point, that is let's say P R. So I'm just trying to show you one thing, that PQ initially, after tying it, the moment we started moving the wire, PQ here, PQ was nothing but just a secant. Yes or no? Secant means such a straight line which is intersecting the circle at two distinct points. That line is known as secant. So PQ is the secant. Yes or no? Okay, then we moved it. It became PS. PS is still a secant, right? Then we kept on moving and it became PR, and PR is still a secant. So far, any confusion? No, ma'am. Okay. And if we will keep on moving and keep on moving, after this one, it may look like just touching at P. Okay. The way we tied initially, that way it may look like just touching the circle at P. Okay. And we will see that if it is touching just P, this is straight line, then this is the tangent. The black one is the tangent to the circle. Can you see that? Making sense? So here sometime you will encounter a statement that secant is the special case of tangent. Secant is the special case of tangent. Okay, you can see initially we have tied the wire.
Okay, then we just started moving it, it became a secant PQ. Okay, then a secant PS, then a secant PR, then the tangent. Okay, when both the point of intersection meets, that means our secant, again I'm reminding you, secant is a just the name, just the term, okay, for the straight line when it is intersecting the circle at 2 point, that type of a straight line is called as secant. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि secant is the special case of, okay, I must write it properly, secant and tangent, I must write it properly, that tangent is the special case of secant. ओके, tangent क्या है, secant का ही एक स्पेशल केस है, जब हमारा जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, पहले PQ फिर PS फिर PR, ऐसे क्लोजर आते 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 दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट मीट कर जा रहा है एक पॉइंट पे, तब हमें tangent मिल जा रहा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो? कैन यू सी दैट फर्स्ट द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PQ था हमारे पास। इस केस को पहले के लिए, अभी के लिए साइड में रखते हैं। ओके, पहले ध्यान से देखो फिगर को, पहले हमारा PQ था। ओके, कैसे भी हमने वायर को टाई किया, पहले हमारा PQ था, फिर Q पॉइंट P के और क्लोज आया, PS बन गया, फिर RPR बन गया, और फिर जस्ट हमारा ये जो लाइन है जस्ट P पे टच करके सर्कल को निकल रहा है, मतलब टैंजेंट बन गया। वही स्टेटमेंट में लिखा है दैट टैंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ओके, स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, tangent is nothing but just the special case of secant where both the end point meets. Making sense? Yes, ma'am. क्यों मैं ये स्टेटमेंट बता रही हूँ? Because this type of statement you will encounter in MCQ question, in assertion reason based question. So that time don't say that I don't have any idea that tangent and secant are related or what. We don't know. Okay, so yes, these two are related. When we will visualize this activity, then yeah, these two are related with each other. Okay, the secant which we were having, we just kept on moving and moving and moving and moving, and that line just became a tangent. Okay, जहाँ पे दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो मिल रहे थे वो पास आते गए आते गए आते गए आते गए, क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, एंड बोथ जस्ट बिकेम वन पॉइंट. Okay, that's how we got a tangent. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, सेकेंड टैंजेंट स्ट्रेट लाइन का नेम है। अलग अलग सिचुएशन में जैसे हमारे स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं वैसे हम नेम, ओके, सेकेंड एंड टैंजेंट बुला रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सपोज आई एम टेकिंग अ सर्कल, और इस सर्कल में मैंने एक सीकेंट ड्रॉ किया। ओके, एक सीकेंट ड्रॉ किया, हर बार मैं इसे सीकेंट ही बुलाऊंगी, एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग इट सीकेंट. Okay, because this type of line is called as secant. So एक सर्कल में मैंने क्या ड्रॉ किया है, secant. Okay, now अब इस ये जो secant AB है, इसके पैरेलल हम बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, AB के पैरेलल। तो हम AB के पैरेलल ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और और कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और मे बी कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑफ द सेकेंड AB, ओके, AB के दूसरे साइड में भी हम AB के पैरेलल बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर पा रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, और मे बी कुछ ऐसा दिख रहा है, और मे बी आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ लाइन पैरेलल, जस्ट अ सेकेंड।
Okay, it has to be parallel, even though it doesn't look like that. Just a second. Yeah. ओके, तो हमारे पास क्या था, एक सीकेंट था, और हमने क्या करने की कोशिश की, इस सीकेंट ए बी के पैरेलल बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करे हमने, तो हमें बहुत सारे अलग अलग सीकेंट मिले, राइट राइट, और दो टैंजेंट भी मिले, राइट, कैन यू सी दैट? तो जब भी यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हमें एक सीकेंट दिया हो तो उसके पैरेलल में सिर्फ दो ही टैंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक बार में हम एक सीकेंट हमें किसी सर्कल में ड्रॉ करके दे दिया गया है तो इस सीकेंट के पैरेलल ओके फोर फोर टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसके पैरेलल ओके इस ये जो सीकेंट हमारे पास है दैट इज पी क्यू। ओके, अगर हमें इसके पैरेलल लाइन चाहिए और टैंजेंट भी चाहिए तो ऐसा सिर्फ मैक्सिमम दो टैंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इज इट मेकिंग सेंस? Yes. इज इट सेंस? Yes, ma'am. Okay, if a secant will be given to you, then at a time at most you can draw two parallel tangent, two parallel tangent, okay, for a given particular secant, not more than two, not less than two, because one on the left, one on the right, always we will be getting at most two tangent. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Now the next part. Just a moment. Suppose, have you ever noticed a bicycle wheel? Okay, the spokes, that means this, 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 this. Does it looks like the radius of the circle, the spokes? Yes, ma'am. Okay, it is nothing but just the radius of the circle. And okay, I'm just highlighting few radiuses over here. And the ground on which the bicycle is moving, does it looks like a tangent to the circle? Yes or no? Yes or no? The ground is looking like a tangent, right? तो जब हम बाइसाइकिल का व्हील ओके ग्राउंड पे मूव करता है तो उसे अगर हमने ध्यान से देखा तो हमें फील होगा कि ये जो ग्राउंड है टैंजेंट जैसा वर्क कर रहा है, इस सर्कल के साथ ग्राउंड हमारा टैंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, नाउ इफ यू विल, देयर आर सो मेनी रेडियस ओवर हियर, ओके बहुत सारे रेडियस हमें दिख रहे हैं, ये जो व्हील में इतने सारे स्पोक्स है ये सारे रेडियस जैसे फील हो रहे हैं, बट अभी के लिए अगर हमने इस पर्पल वाले रेडियस को ध्यान से देखा तो हमें ऐसा दिखेगा कि ये जो पर्पल वाला रेडियस है ये परपेंडिकुलर है टैंजेंट के साथ। क्या तुम्हें भी ऐसा दिख रहा है? ऐसा देख के फील होगा कि ये जो पर्पल रेडियस है ओके ये द पॉइंट विच इज टचिंग द सर्कल, इस पॉइंट का भी एक नेम है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं। टैंजेंट हमारे सर्कल को एक और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकलता है और जिस पॉइंट पे टैंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट का भी एक पर्टिकुलर नेम है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं। तो अगर हमने कभी बाइसाइकिल को ध्यान से देखा व्हील को तो हमें ग्राउंड टैंजेंट जैसा फील होगा
और हमें ऐसा फील होगा कि ये जो स्पोक है, एक पर्टिकुलर स्पोक, ये ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें फील होगा. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू विल फील दैट हमारा ये जो व्हील है ये मूव करके यहाँ ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है. और इस बार ये जो ग्रीन वाला, जस्ट अ सेकेंड, इस बार ये जो ग्रीन वाला रेडियस है ये हमारे ग्राउंड लेवल के साथ परपेंडिकुलर दिखेगा. ओके. इस there is a theorem over here in this chapter which we will be proving. So let me help you reminding अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. ये सारी चीजें एमसीक्यू क्वेश्चन में, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं. ओके, ट्रू फॉल्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है जो कि हमारे सर्कल को टच भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बुला सकते हैं. क्यों? the name is saying all about itself, non intersecting line. जब हमारा ऐसा ही एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके निकलता है, ओके, टू पॉइंट्स पे, तो ऐसे लाइन को हम सीकेंट बुलाते हैं. और जब हमारा लाइन सर्कल को एक और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकलता है, तो ऐसे लाइन को इस बार हम टैंजेंट बुलाते हैं. टैंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, नाउ और हमने क्या सीखा यहाँ पे, दैट tangent is nothing but just the special case of secant. secant दो टू पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है. Now this 2 point if just will come closer, closer, closer and closer, and after a certain point it will start looking like a tangent. तो वही लाइन जो पहले सेकंड की तरह दिख रहा था अब टैंजेंट जैसा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि हमने उसे मूव करा है. ओके, तो वहां से एक स्टेटमेंट निकल के आया दैट टैंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन बोथ द एंड पॉइंट मीट्स. दोनों एंड पॉइंट, पहले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, दोनों क्लोजर आते गए. ओके, इट बिकेम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड met at a point. So that's how we got the tangent. और उसके बाद अब हम ये जो साइकिल वाली एक्टिविटी है इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे. इसके पहले हमें और एक चीज डिस्कस कर लेना चाहिए, दैट इज इफ वी आर हैविंग अ सर्कल, then this is called the interior part of the circle and this is called the exterior part of the circle. इस स्क्रीन पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो हमारा स्क्रीन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक सर्कल के इंटीरियर रीजन हमें दिख रहा है, एक सर्कल ओके ऑन द सर्कल वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं. इस स्क्रीन पे अगर कहीं भी कोई एक पॉइंट पॉइंट जस्ट ड्रॉ कर दे तो वो पॉइंट या तो सर्कल के इनसाइड इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा या फिर एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा या फिर सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल लाई करेगा. मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? यस और नो? Yes. ओके, सो थ्री already our screen got divided in three part: interior part of the circle, exterior part of the circle, and this one is called on the circle, on the circle. Okay, now agar now we understand what is the meaning of the radius. Radius means this is radius. Okay, if you will take the distance between center and any point on the circle, that's called radius. This is radius, this is radius, this is radius, this is radius. Okay, तो अगर हमने सर्कल के जस्ट एक्सटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट ले लिया, कोई एक पॉइंट हमने लिया, लेट्स से P. This point is lying in the exterior part of the circle. अब इस पॉइंट P का O से डिस्टेंस हमें निकालना है. O से पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस हमें निकालना है.
पॉइंट ओ एंड पी के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, क्या हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस ओपी इज बिगर देन द रेडियस? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. अगर हमारे इंटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट क्यू, तो इस पॉइंट क्यू का ओ से जो डिस्टेंस निकल के आएगा, कैन वी से दैट ओ क्यू इज स्मॉलर देन द रेडियस? यस और नो? Yes. यस। ओके, एंड इफ वी विल टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इस बार हमारा पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर ऐसा लाई कर रहा है, यू कैन विजुअलाइज अ बैंगल, योर पॉइंट इज जस्ट लाइंग ऑन द बैंगल, इफ द नेम ऑफ द पॉइंट इज एम, देन ये इस पॉइंट एम की डिस्टेंस ओ से is nothing but just the radius. Is it making sense to all of you? Yes or no? Yes. Okay, OP, the distance is bigger than radius. OQ is smaller than the radius, and OM is the radius itself. Okay, if we understood this one, then अब हमें और एक चीज डिस्कस करना है, दैट इज जब भी हमारे पास कोई पॉइंट होता है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट, ओके, देन द अबव वन। ओके, इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग अ थ्योरम। विच कंसेप्ट? दैट कंसेप्ट विच आई वाज टेलिंग यू, कि अगर सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा ही होगा। अगर सर्कल के इंटीरियर पार्ट में कोई भी पॉइंट है तो रेडियस से उस पॉइंट सॉरी सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, स्मॉलर होगा। ओके, एंड सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल कोई पॉइंट है तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। अगर हमें ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है, देन हम एक दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं कि अगर मैथ्स में हमारे पास कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, लेट्स से द नेम ऑफ द पॉइंट इज ए, अगर हमारे पास पॉइंट ए है और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, लेट्स से पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट ए का स्ट्रेट लाइन पी क्यू से डिस्टेंस हमें निकालना है। ध्यान से सुनो, ओके, पॉइंट ए का स्ट्रेट लाइन पी क्यू से हमें डिस्टेंस निकालना है। व्हाट? ए का पी क्यू से डिस्टेंस निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पी क्यू से। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Okay, maybe one of the student just told me the distance is this one, 12 centimeter. Okay, and another student said that no, I am getting 13. Another student said that no, but I am getting just 10. Other student said that no, I am getting 8. तो मैं कौन सा डिस्टेंस लूं? ऐसे डिस्टेंस वैरी करेगा तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं हमेशा। जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस की बात होती है तो ये सारी रैंडम डिस्टेंस के बारे में हम सोचते भी नहीं है, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। मैथ्स में लिखा नहीं होता है दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयर इज अ पॉइंट and a straight line and distance of the point from the line is 20 centimeter, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात हो रही है। ओके, तो अगर किसी पॉइंट्स का किसी लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेते हैं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी तुमने सीखा था क्लास 9 में कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मे बी 2,3, तो हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बताते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है और ये रहा जो डिस्टेंस ये 2 यूनिट है। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। सो अगर हमें ये समझ में आ चुका है कि जब भी डिस्टेंस की बात करते किसी पॉइंट की, किसी लाइन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। या फिर कभी भी बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। Shortest distance of a point A from the line PQ. Shortest distance of a point A from the line PQ is 5 centimeter. अगर ऐसा लिखा है किसी क्वेश्चन में या किसी डेटा में, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. तो अगर हमें ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है तो हम एक प्रूफ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग टू द प्रूफ। जस्ट अ सेकेंड ना। द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through So let's see what the theorem says, then we'll be proving it. The tangent at any point of a circle. ओके, सर्कल के ऊपर अगर हमारे पास किसी भी एक पॉइंट पे एक टैंजेंट है, द tangent at any point of a circle, any point of a circle,
Okay, there is a tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से पास होने वाला जो रेडियस, इस सर्कल में एक रेडियस होगा जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहा होगा। ये जो रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ यहाँ पे इस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री क्रिएट करेगा। यही हमें प्रूव करना है। ओके, अभी अभी हम साइकिल वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने क्या देखा कि जब हमारा साइकिल का व्हील जो है, if the wheel of the bicycle is just at any point, if we are trying to notice it, then we are seeing so many radiuses over here, so many radius, but there is a particular radius, okay, which is touching the ground and looks like perpendicular. When you will see it, then you will realize it. Okay, it will look like a perpendicular. The spoke of the wheel, okay, will feel like just so many radius we are having, and the radius which is just touching the point of contact, that will feel like a perpendicular. But according to our feeling, we cannot say that, hence the theorem. So we have to prove it. So just now we have discussed the concepts which will help us proving it, that if we are having a circle and in this circle, if we are having a tangent at a particular point. Now initially I have explained you tangent means such a straight line which is touching the circle at one and only one point. सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है P और टैंजेंट सिर्फ उसी पॉइंट को टच करके निकल रहा है। एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ पॉइंट P को टच करके निकल रहा है। पॉइंट P सर्कल के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ उस पॉइंट P को टच करके निकल रहा है। ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम टैंजेंट बुलाते हैं। ओके, तो हमारे पास एक टैंजेंट है जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। अब इस सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस होंगे। दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, this is also a radius, this is also a radius, this is also a radius. ओके, हमें प्रूफ करना है कि जो जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ओके, इस टैंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ 90 डिग्री क्रिएट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। हम बोलेंगे सर्कल, इस ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी है हमारे पास, इस पे हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। चलो एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया और एक पॉइंट हमने आर ले लिया और मे बी एक पॉइंट हमने एस ले लिया और हर बार सेंटर ओ की डिस्टेंस क्यू से, कैन यू सी द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट क्यू like this, it will be more than the radius. OQ will be bigger than the radius. क्यों? क्योंकि सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में एक पॉइंट है और वहां से सेंटर की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो? सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में एक एक्सटीरियर रीजन, ये जो एक्सटीरियर पार्ट है वहां पे एक पॉइंट है क्यू, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बिगर होगी। हाँ या ना, यस और नो? Okay, so OQ is bigger than the radius. Is it making sense to all of you? Afrin, Samia, Sara? Yes, ma'am. अगर हमने दूसरे पॉइंट Q की बात ही नहीं करी, पॉइंट R की हम बात करेंगे, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर इस पॉइंट की भी डिस्टेंस हम सेंटर से निकाले OR, दिस टू इज बिगर देन द रेडियस। ये जो OR है ये भी रेडियस से बिगर होगा। क्यों? क्योंकि R सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट OS, दैट विल आल्सो बी बिगर देन द रेडियस, क्योंकि अगेन S हमारे सर्कल के एक्सटीरियर, कितना भी पास हो एक्सटीरियर में तो है ना। can we see it's closer and closer to the circle, but still it is lying in the exterior part of the circle. I am talking about the point S,
the distance of S from O. Making sense? Making sense? Yes. Okay. So OQ is bigger than the radius. OR is bigger than the radius. OS is bigger than the radius. And OP equal to the radius. OP equal to the radius. तो हमारे पास एक पॉइंट था दैट इज O, और उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ए बी की हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, राइट? हमारे पास क्या था, एक पॉइंट O है जिसे हम सेंटर बुला रहे हैं या फिर जो भी. अब इसे इस वे में भी हमें समझना होगा कि हमारे पास एक पॉइंट O था. इस पॉइंट की हम इस लाइन से डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे थे ए बी. और जब जब हमने डिस्टेंस निकाला, क्यू की डिस्टेंस, आर की डिस्टेंस, एस की डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस ओके हमारे रेडियस से बिगर आ रहे थे. और जब हमने ओपी डिस्टेंस निकाला तो ये रेडियस के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. पॉइंट ओ की लाइन ए बी से ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और मैथ्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बुलाते हैं. तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा. आ रहा है समझ में? यस और नो? इज इट मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Okay, so OQ bigger, OR still bigger, OS bigger. How much bigger we don't know, but bigger than OP. That means OP must be the shortest distance, hence OP must be perpendicular distance. Therefore the theorem, what is the theorem? Okay, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हम कहीं भी एक टैंजेंट ड्रॉ करें, कहीं पे भी अगर हमने किसी भी एक पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करा तो हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरूर मिलेगा. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला रेडियस ये रहा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट के साथ. आ रहा है समझ में? Getting it? So this is how we will prove it also. We don't have anything to prove over here. We will just write the statements and we will say hence the theorem. Okay, so let me show you how to write it. We don't need to take 3 point. Q and S is fine. I am just removing this R. 2 points enough है declare करने के लिए कि हमारे पास ये जो OP है, this is the shortest distance. Okay, here we can see, पहले हमें लिखना होगा there is a, let's assume there is a point Q and S on the tangent AB where P is the point of contact. तो हमने बस सिर्फ और सिर्फ यही डिक्लेयर करा है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक टैंजेंट है, एक सर्कल है और एक टैंजेंट है. इस टैंजेंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए, क्यू एस. ओके, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. Now we will say that we know QS is bigger than, okay, bigger than, rather than writing O,
radius, we will be writing YQS. It is from the center O, the distance of OQ is bigger than OP, and OS is also bigger than OP, as Q and S lies in exterior part of the circle. जो जो हमने डिस्कस किया है वो हमें स्टेटमेंट में लिखना है, या इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है प्रूफ करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ वी हैव नेवर सीन दिस थ्योरम कमिंग इन एग्जाम, बट who knows, who knows, it's there in your book and it can come, so be careful. Q and S lying in the exterior part of the circle, hence these two are bigger than OP. That means, that shows OP is shortest distance of the center O from the tangent AB. Hence, OP must be perpendicular to AB, and we are done with the theorem. Is it clear? We don't need to declare that in mathematics shortest distance means the perpendicular distance. No. Okay, everyone knows it, and we also know. Is it clear to all of you? Yes, ma'am.